और इसी बीच कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा कि बेंगलुरु मेट्रो येलो लाइन मंसूबे में मरकज का हिस्सा सिर्फ 20% है। इन्होंने शिकायत की है कि टैक्स महसूलात में अहमदाबाद को 20% हिस्सा मिलता है, जबकि बेंगलुरु को सिर्फ 10%। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पर शिवकुमार ने कहा कि शहर को दीगर बड़े शहरों और कौमी दारुल हुकूमत के बराबर अहमियत दी जानी चाहिए और ये मुतालिबा गैर सियासी है। शिवकुमार ने मजीद कहा कि बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और एमएलएज सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म या पार्टी के नाम पर वोट हासिल कर रहे हैं, जबकि शहर को मतलूबा फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं। What is to be given to Bangalore? They should look Bangalore like a capital city. We have not been given sufficient funds. Bangalore has been neglected. That is what I would like to remind the Honorable Prime Minister, that you have to take care of Bangalore like a national capital. This is a city which is giving more strength. Bangalore, India has to be seen through Bangalore. That is also what Mr. Vajpayee had said earlier. So this is a very Bangalore, entire world will look India through Bangalore. That is what I am repeating again and again. BJP, MPs, MLAs... Forget what, no MP, MLA of BJP, they have not met the Prime Minister, they have not requested, they have not taken care. You please tell me one thing which they have done at the time of their government here. They could not meet the Prime Minister here. Once, even at the time of where there is a calamity, they have not met. It is all nothing, they are just waste in the